जिस जगह करवा रहे था जो स्कल होता है हमारा, हाय गाइस, आई कैन टॉकिंग यू टू आकुलर एनाटॉमी। तो स्कल जो होता है ये लार्जेस्ट नंबर होता है ऑफ द सेपरेट बोन, ठीक, यूनाइटेड बाय द सूचर फाइब्रस एंड इमूवेबल जॉइंट। स्कल जो होता है टू टाइप में होते हैं, एक क्रेनियल होता है, एक फ्रेसी होता है। तो क्रेनियम में क्या होता है, क्रेनियल कंसिस्ट 8 बोन, 2 पार्टियल, 2 टेम्पोरल, 1 each occipital and frontal and sphenoid and ethmoid bone। जबकि पार्टियल बोन क्या होता है, रूट ऑफ साइड ऑफ क्रेनियल ईच अदर बाय द क्रेनियम एंड अदर मिड लाइन इन द सेजेंटियल सूचर with occipital bone or posterior in the lymphoid suture with the front of the anterior and the corneal suture। occipital bone क्या होता है, occipital bone होता है from the posterior floor of the corneal skulls and posterior floor of the cranial cavity and inner surface of bone from the posterior cranial fossa। There are depression in which bone, cerebellum and bone medulla oblongata। Occipital bone articulate with the temporal bone and parietal bone and sphenoid bone। temporal bone क्या होता है, temporal bone are squamous portion from the side of the cranium and articulate with due to parietal bone and sphenoidal bone and zygomatic process and articulate with the zygomatic bone। This is the frontal bone, this is the corneal suture, that is the parietal bone, this is the sagittal suture, this is occipital bone, that is the lymphoid suture, that is the lymphoid suture। See, this is the superior view of the cranium, superior view of the cranium। अब देखो mastoid process, style process from the veniform aspected with these from two located stylo stylomastoid foramen। Occipital bone or the floor of skull and carotid cranial bone in floor of skull and carotid cranial superior anterior form and petrous portions provided entrance internal and carotid artery into the cranial cavity। फ्रंटल बोन क्या होता है, फ्रंटल बोन फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द क्रेनियल एंटीरियर फ्लोर of cranial cavity and superior part of face at top of skull। at this bone articulate मतलब joint in the parietal bone and inferior
It articulate with the sphenoidal bone and ethmoidal bone and lacrimal bone. In pharyngeal and articulate with at nasal bone and maxillary bone and zygomatic bone. देखिए एंटीरियर सुपीरियर विथ इथेमॉइड एंड पैरिटियल depression and superior cranial surface of body, sphenoidal bone and hypophyseal fossa. This is the frontal, this is the cross corneal suture, that is the parietal, this is the nasal maxilla जो कि nasal side में होता है. This part is occipital. This is the mid mandible. This is the nasal maxilla.